Hello student, today we are going to discuss about practical number 1, that is identify different components of vapor compression refrigeration system. Okay, now we will discuss one by one all the components of vapor compression refrigeration system in this practical, and then we will see the components of domestic refrigerator and components in the vapor compression refrigeration test rig. Okay, now this is a diagram of components of different components of schematic diagram of different components of vapor compression refrigeration system. This is the first component, major component of vapor compression refrigeration system, that is compressor. Okay, now for small units the compressor used is hermetically sealed compressor, which we have seen in the domestic refrigerator or in the testing available in the our laboratory. That small capacity equipments, okay, that over there, that hermetically sealed compressor is used, where all the components like stator, motor, cylinder piston arrangement, okay, all these components are sealed inside a vessel and it is made leak proof. Okay, that's why it is called as hermetically sealed compressor. Now for large capacity plants, we have seen in chilling center as well as in ice plant, over there open type reciprocating compressor, okay, that is used, and that is multi-stage compressor or two-stage compressors are available over there. Now the function of the compressor is to compress the refrigerant from low pressure to high pressure. Now the vapors coming out from the evaporator are passed to the compressor through the accumulator. That vapors are compressed from low pressure to high pressure, from evaporator pressure to condenser pressure with the help of the compressor. Okay. Now after compression, that vapors are passed to the condenser, and in condenser that vapors are liquefied. Heat from that refrigerant vapors is removed, okay, and the refrigerant is liquefied at higher pressure in the condenser. Now that condenser may be air cooled condenser. In air cooled condenser, that may be natural draft air cooled condenser, which is used in the domestic refrigerator. That may be forced draft air cooled condenser, which is used in the test rig, which is available in our laboratory. Okay. That condenser may be water cooled condenser. We have seen the open type water cooled condenser in chilling center. Okay, again we have seen shell and tube type condenser in the ice plant. Okay, the condenser may be air cooled or water cooled. Then that refrigerant, after liquefaction in the condenser, that refrigerant is passed through the dryer and filter, where the moisture available in the refrigerant, that is removed with the help of dryer and filter. If the moisture is passed over here, okay, through the expansion device, then the temperature will get dropped down below 0 degrees Celsius, and the moisture contained in the refrigerant, that will get condensed, that will get solidifies, that will get converted into small particles, and that small particles may be settled in the capillary tube or expansion device, or that may pass to the evaporator. If it is passed to the evaporator, what will happen? That will adhere on the inner wall of the evaporator tube. Evaporator tube जे असेल त्याच्या inner wall वरती ते काय होईल? adhere होईल. आणि तसं जर झालं, at that time the heat transfer rate from the content of the evaporator to the refrigerant, that will get reduced. That's why moisture present in the refrigerant, that is removed with the help of dryer and filter, and then it is passed to the
receiver. This one is a receiver. The function of receiver, that is work as a storing element of the refrigerant, that is a receiver. After receiver, that refrigerant is passed to the expansion device. Now for small units, the expansion device may be the capillary tube. For large units, the thermostatic expansion wall, automatic expansion wall is used. In domestic refrigerator, the expansion device used is the capillary tube. For small units, it is used as a that is capillary tube, but for large units, that is expansion walls are used, thermostatic expansion wall or automatic expansion wall. Over here, there will be a sudden drop in the pressure. When sudden drop in pressure, that causes sudden drop in the temperature. Now low temperature, low pressure refrigerant is passed to the evaporator. Now in evaporator, we can use it for different applications. Okay. In domestic refrigerator, we have seen the freezer. Okay, which is at the upper portion of the refrigerator, that is evaporator. In case of chilling center, we have seen the evaporator, that is chilled water, that is used for chilling the water, and that water is used to chill the milk. That is the thing. In case of ice plant, we have seen the evaporator where the brine solution is chilled. Okay, heat from the brine solution is removed. Means the evaporator, we can say the evaporator is used differently for heat absorption for different applications. Okay, that is evaporator. One more equipment is there, that is accumulator. That is accumulator. The function of the accumulator is to separate out the vapors from liquid. Okay, how it works? If the flow rate of the refrigerant, liquid refrigerant to the evaporator is more, heat absorption in the evaporator, that will be less. And if such situation occurs, at that time there is a possibility of passing of liquid refrigerant to the compressor. Okay, जर या ठिकाणी फ्लो जास्त असेल, हीट कमी ऍब्सॉर्ब केली, तर लिक्विड रेफ्रिजरंट जो आहे तो डायरेक्ट कशाला जाईल, कॉम्प्रेसरला जाईल. आणि कॉम्प्रेसरला जर लिक्विड रेफ्रिजरंट डायरेक्ट पास झाला तर काय होणार आहे बघा. या ठिकाणी याच्यातलं कॉम्प्रेसर मधलं जे लुब्रिकंट्स आहे, दॅट लुब्रिकंट्स विल गेट वॉश्ड आउट. wear and tear in the reciprocating or different moving parts will get increase, and due to that life of the compressor will get reduced. That's why accumulator is used over here, so that over here liquid refrigerant will pass to the accumulator, and vapors which are settled over here in upper portion, that only vapors will get passed to the compressor. Okay, and the life of the compressor will get increased. That is the function of the accumulator. Okay, now this is about the major components and function of the components in vapor compression refrigeration system. We already seen the pH and TS diagram of vapor compression refrigeration system. Again I am explaining pH and TS diagram. pH diagram and TS diagram. Saturation curve, saturation curve, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, okay, 4 to 5, sorry, 1 to 2 compression, condensation, 1 to 2 compression, 2 to 3 condensation, 3 to 4 expansion, and 4 to 1 evaporation.
4 to 1 evaporation. Okay, 1 that is before compression, only vapors are passed. इथे accumulator आहे, vapors are passed to the compressor. That's why point 1 will be on the saturation curve. 1 to 2 that is compression, vapors will get superheated. Okay, then condensation will start. During condensation, heat is removed from the vapors. 2 to 3 condensation, that vapors are converted into liquid in the condenser, and then it is passed through the expansion device. 3 to 4 expansion device. Okay, sudden drop in pressure that causes, तर या ठिकाणी बघा प्रेशर जे आहे P2, या ठिकाणी प्रेशर जे आहे P1, तर P2 पासून P1 म्हणजे कंडेन्सर प्रेशर पासून इव्हॅपोरेटर प्रेशर पर्यंत हे काय केलं जातं, एक्सपान्शन केलं जातं. and sudden drop in pressure that causes sudden drop in temperature. Okay, and that liquid refrigerant that is passed to the evaporator. So evaporator मधून pass केल्यानंतर that will get absorb heat and will get converted into vapors. That vapors are further compressed in the compressor. That is it. In TS diagram, point 1 will be on the saturation curve. 1 to 2 isentropic compression. 2 dash 3 that is condensation. 3 to 4 expansion, and 4 to 1 that is evaporation. Okay, this is pH and TS diagram of vapor compression refrigeration test rig. Okay, now this is about the first practical, that is identify different components of vapor compression refrigeration testing. Now refrigeration system. Now we will see the actual components in the domestic refrigerator as well as in the test rig. ये आपका सेटअप है, ठीक है. तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये है आपका कंप्रेसर. ठीक है, ये कंप्रेसर से आपका जो हाई प्रेशर का और हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है वो पास ऑन होगा किसकी तरफ होगा, आपके डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू. तो ये है आपका डिस्चार्ज ट्यूब. ये डिस्चार्ज ट्यूब से आपका रेफ्रिजरेंट पूरा फ्लो होगा और ये कहा जाएगा सीधा आपके कंडेंसर. कंडेंसर में ये देखिए जो जाली लगी हुई है पूरा का पूरा क्या है आपका कंडेंसर. ठीक है, और यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो होगा. ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेंट कौन से स्टेट में रहेगा आपके, अभी यहाँ पर तो वेपर स्टेट में था लेकिन यहाँ पर वो पूरा फ्लो होने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है वो जो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो होगा. यहाँ पर हम लोग नेचुरल एयर कूलिंग कर रहे हैं. ठीक है, एयर कूलिंग से यहाँ पर होगा और यहाँ से कंडेंसर से ये कहाँ पे जाएगा, पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट जाएगा आपके फिल्टर और ड्रायर में. ये है आपका फिल्टर और ड्रायर. ठीक है, यहाँ से फिर आपका दूसरा कंपोनेंट कौन सा चालू होने वाला था, एक्सपांशन डिवाइस. तो ये देखिए ये जो कंपोनेंट है, ये जो छोटी सी लाइन जा रही है ये क्या है आपका एक्सपांशन डिवाइस. ठीक है, ये एक्सपांशन डिवाइस का नाम क्या है, कैपिलरी ट्यूब. यहाँ से फिर ये जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ पे फ्लो होगा, वो जाएगा इवोपरेटर की तरफ. चलिए चलते हैं आगे इवोपरेटर की तरफ. तो ये है आपका इवोपरेटर सेक्शन. ठीक है, यहाँ पर ये जो छोटी छोटी आपको ट्यूब्स दिख रही है, फोकस करो इसके ऊपर. यहाँ पर ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही है ये क्या है आपका इवोपरेटर ट्यूब. ये क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आपके, जो भी फल फ्रूट्स वगैरह होंगे सबकी वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो स्टेट है उसको क्या करेगा, वो चेंज कर देगा. ठीक है, मतलब लिक्विड से वो क्या वेपर स्टेट में आ जाएगा. इसके बाद यहाँ पर इसके बाद जो लगा रहता है वो होता है एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर इसके अंदर का डिवाइस है. ठीक है, जो क्या कर रहा था, हमारे जो भी यहाँ पर अगर वेट स्टीम होगी तो उसको क्या कर रहा था, रोक दे रहा था. इसके बाद में वो कहा जाएगा आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ पे जाएगा, वापस से कहा जाएगा आपके सक्शन ट्यूब के थ्रू. ये जो है ये ट्यूब है, ये क्या है, सक्शन ट्यूब. ये सक्शन ट्यूब के थ्रू कहा जाएगा वापस से कंप्रेसर में और ये प्रोसेस क्या होंगी, चलती रहेगी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट प्रैक्टिकल. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा.
यहाँ पर हम लोग आए हैं दूसरे सेटअप की तरफ, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कमर्शियल अगर आपको रेफ्रिजरेशन करना होगा कमर्शियल जगहों पर, तो आप किस प्रकार से करोगे। तो देखो यहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम है, यहाँ पर ये कौन सा है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ये है आपका फोर्स डॉट कूलिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो कूलिंग हो रही है कंडेंसर में, ये कंडेंसर है आपका, तो यहाँ पर जो कूलिंग हो रही है नेचुरली नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको एक फैन लगा के दिया है, यहाँ पे फोर्स डॉट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, दूसरा डिफरेंस यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्सपांशन वॉल। ठीक है, यहाँ पर अपने को इफिशियंसी बढ़ानी थी, इसीलिए अपन ने एक्सपांशन वॉल में क्या किया, दूसरा एक्सपांशन वॉल कैपिलरी ट्यूब यूज ना करते हुए अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है आपके डोमेस्टिक और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में।